नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी दर्शकों का समाचार 24 प्लस पर। मैं एकता सहगल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीनियर एंकर, समाचार 24 प्लस से, साथ ही साथ मानस वेल्थ और मदरहुड क्लब की फाउंडर भी हूँ। आप सबको बार बार कुछ ऐसी शख्सियत से मिलवाती हूँ जो कुछ अलग हटके करते हैं। अब आप कहते होंगे मैं हर बार आके यही कहती हूँ, भाई क्यों ना कहूँ। जब लोग ही ऐसे दिलचस्प आते हैं जो अपनी लाइफ में इतना कुछ करते हैं, और खासकर अगर मेरे सामने एक और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाचार 24 प्लस की हो, जो एक women entrepreneur है. She's an empowered woman who has not only shaped her own career, her future, but has worked extensively to shape the future and life of many women. An empowered woman working towards educating, empowering, and enlightening the paths of many other women. She is none other than Mrs. Madhavi Yedla. She is the largest distributor of Tupperware, an organization that has always supported the growth of women. But was Madhvi always this? Or there is a journey that she walked to reach where she is today, that she has become a source of inspiration for one and all. I can tell you her story, but that is not going to do it justice, because when Madhvi tells us how her journey was, how she carved a place for herself, and where she stands today, where she has shaped the lives of not just one, two, three, but many, and has created a mark for herself. So, this, ladies and gentlemen, is Mrs. Madhvi Yedla. So, a warm welcome. How are you doing? Good, Ekta. Thank you so much for the lovely words. And of course, a very inspirational word for me. And every day is a learning lesson to me. Absolutely. And I think that's what makes you an empowered woman, that you don't stop learning, unlearning, and learning again. And I think that's what makes you even more special for all those who look up to you. Thank you. Thank you Right? so much. So I am tempted to say a few words for you, but I will reserve that for the later part. I want you to go back to your childhood days. जब आप छोटी थी, how मैं was your छोटी journey? my journey was very good right from my childhood. And बहुत लोग कहते हैं कि you know being born in a fantastic family is a big achievement in your life, and I am really blessed because I'm born brought up in such a beautiful family called the Pandrangi family, down way back in Vishakhapatnam, which is very highly educated and professionally qualified, a couple of bureaucrats in my family, and every day was a learning to me. And me being the youngest daughter for the entire family, named by my chachu, Dr. Vasu Pandrange, as Madhvi Pandrange, and I am blessed क्योंकि हमारे घर पे वी हैड बोथ लाइक बिजनेस क्लास एंड एन एजुकेटेड फैमिली। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि लाइफ में कुछ करना है ज़िंदगी में, and everybody was a topper. You name my Jiju, he's a topper. You name my chachus, they are toppers. And everybody very well settled. And my father हमेशा एक चीज़ कहता था कि ज़िंदगी में कुछ भी हो बेटा, your education is with you all the time. So if you are well educated, well qualified, this will save you in your entire life. So those were the words which got parked into my head. And since then on, I always thought कि जिंदगी से शुरू से कुछ बनना है तो टॉपर रह के ही कुछ करना है. Right from my childhood, if you take my schooling, my college, and my masters, everywhere I stood as a topper, and I was one of the national merit scholarship. I achieved it also. And in my university also, I was one of the toppers, and gold medal भी मिला मुझे. And मैंने दोनों इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमेट्रिकल स्टैटिस्टिक्स में मैंने अपने पढ़ाई किया था. जिंदगी में और कुछ लिखा था मेरे लिए. और जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था, इट वाज लाइक अ
वॉक इन फॉर मी, क्योंकि जो भी टॉपर्स थे तो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च ने रिक्रूट किया एंड आई वाज वन ऑफ द रिक्रूटी देयर. I have done 7 national programs and 5 international programs, and I was very happy because जो मेरा program performance appraisal था, it was rolled by none other than हमारी president Pranab Mukherjee. Wow. He was the chairman for the Institute of Applied Manpower Research, and I'm proud because being the youngest recruitee there, तो सबको लगा कि इतना कैसे तो जल्दी इसको जॉब मिल गई. But to earn something you really need to do a lot of hard work. और मेरा पूरा टाइम टेबल फिक्स था, and I, whatever my success is, I would like to dedicate it to my parents, my in-laws, my children, my sisters, who every time looked after me very well, कि माधवी तुमको कुछ करना ही है लाइफ में. ठीक है. सो माय अंकल्स एंड माय लेट फादर, माय हस्बैंड, माय फादर वाज माय सक्सेस स्टोन, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे पापा से मैं पूछती थी, ही यूज्ड टू गाइड मी सो वेल, कि एक टाइम टेबल उन दिनों में, एक मेरा टाइम टेबल उन्होंने बोला बेटा तू सेट कर. तुमने टाइम टेबल और प्लानर को फॉलो किया ड्यूरिंग दोज डेज, ही स्पोक अबाउट अ प्लानर. And I'm proud. Even he was nominated for the President Award, and he was a dock superintendent of Visakhapatnam Port Trust. बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उस परिवार से आते हो, और एक चीज़ हम लोगों को शुरू से सिखाया, जमीन को मत भूलना, अब जितना भी ऊपर चढ़ोगे तो, बट क्योंकि आप जमीन में ही खड़े होते हो. So that was the things even I taught my children also. Ki do not fly high, always be on the ground, because you never know when you are on the ground. So flying high is important. Having said that, being grounded is double important. Then only you can achieve whatever you want in your life. Absolutely. It looks like maybe your late father and my late father would have had a conversation, because these were something that we also heard from our father all throughout, that, you may achieve all that you wish to, but you always have to have your ground, you have to be very firm at the foundation level so that you never fly so high that you forget that there is a base where you will always come down. Because even if you look at a bird, she always takes the initial push from the ground. Any base for Hmm. that matter, whether it is a tree branch or the ground, you need that thrust. So we should never Yeah. forget that. That's very, very beautifully explained and said. Also, जितने भी हमारे दर्शक हैं जो सुन रहे हैं, और जिन्हें ये लगता है कि जो महिलाएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें या कॉम्प्लिकेट चीज़ें नहीं कर सकती हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू नंबर्स, economics, finance, statistics. In front of you, there are two women sitting who have Mm-hmm. done that. Madhvi ji, who's done economics and statistics, myself, a financial mentor. So, yes, women can do this. There is no such thing that women cannot do it. नवरात्रों का फेस्टिवल चल रहा है और यहाँ पे दो शक्तियाँ आपके समक्ष हैं जो थोड़ी सी अपनी भी तारीफ कर लेते हैं. हम दोनों अपने अपने फील्ड में रोल मॉडल्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि खुद भी सीखें और अपने आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं उनको सिखाएं, उनसे सीखें और उन्हें एम्पावर करें. तो चलिए वापस से फोकस लाते हैं माधवी जी के ऊपर. तो माधवी जी, आपने इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में अपनी एजुकेशन की, आपने मास्टर्स किया, and then I'm assuming that a natural progression to that would have been ki you would have been made to walk the family path. Yeah. Or did you work Abs- for some time? या आई वर्क फॉर सम टाइम, एंड मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जब ज़िंदगी में ना एक औरत के लिए कहीं ना कहीं अपने सेक्रीफाइस भी किया ना, एक अच्छा कॉज के लिए करती है. ठीक है. आई टुक दिस एज अ चैलेंज, क्योंकि जब मेरा भी करियर स्टार्ट हुई थी शेप अप करना, मेरे हस्बैंड का भी करियर स्टार्ट हुआ था शेप अप करना, एंड मैंने कभी भी ये चैलेंजिंग टाइप पे नहीं लिया, जो तुम कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती. ये जो चीज़ें हैं ना बहुत लोगों में आजकल
जो दरारें पैदा कर रही है। मैं कहती हूँ कि हर औरत के लिए, हर आदमी के लिए हर चीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में ये चीज़ 3 चीज़ें हैं, ट्रस्ट, लॉयल्टी एंड सैक्रिफाइस। ये 3 चीज़ें हर औरत को और हर आदमी को, दोनों को करेंगे ना, वो फैमिली ज़रूर सक्सेसफुल होती है। और ये चीज़ मेरे पापा ने मुझे बहुत, मैं भी एक छोटी-सी, जैसे अब शादी हो जाता है तो लगता है ना, मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, मुझे क्यों करने नहीं दे रहे। तो माय फादर एंड माय मदर हैज़ हैंडल्ड मी सो वेल, ठीक है? तो उन्होंने बोला, बेटा कुछ भी हो, एक माँ का जो बच्चों के लिए जो पालने का और सिखाने का जो तरीका होती है ना, वो बाप के अंदर भी नहीं होता। और उन दिनों में एम्पावरमेंट जस्ट स्टार्टेड। मैं ये नहीं कहूँगी, हम सारा पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को बैक स्टेप कर लेते थे कि हो सकता है मैं ये ना करूं। वी वर ऑल लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, आई विल नॉट से 100% कंफ्यूज्ड, वी वर ऑल लिटिल बिट कंफ्यूज्ड। तो देर यूज टू कम आर हैंड होल्डिंग बाय आवर पेरेंट्स। तो मेरा पापा ने बोले, जिंदगी में आपके लिए बहुत चीजें लिखा है बेटा, नो बडी कैन स्टॉप यू, ठीक है? इफ यू डू समथिंग फॉर योर फैमिली नाउ, ठीक है, टुमारो यू कैन रीप इट इन टू रिजल्ट। और मुझे ये टपरवेयर अपॉर्चुनिटी जब आया था, आई वुड लव टू थैंक ज्योति नरगस, who was the one who believed in me, who looked at the spark of me, and she said कि you are the right candidate for the distributorship, what come may be। मैं जितनी बार उन्होंने मुझे ऑफर दिया था, उतनी बार मैं पीछे हटते गई। मैंने सोचा कि इतनी बार 2001 से लेके 2008 तक 7 साल मेरे पीछे पड़ी गई थी अपॉर्चुनिटी कि तुम बनो, साउथ दिल्ली से लेके हर तरीका का, द्वारका, एवरीवेयर। बिकॉज द्वारका को मैंने विमेन को जब लाइफ्स को शेप अप किया था, आई स्टार्टेड माई जर्नी देयर। तब मुझे लगा कि जब मैं यहाँ पे कर सकती हूँ, व्हेन आई नेवर नो, आई मीन नॉट इवन अ सिंगल वर्ड हिंदी जब मुझे पता नहीं था, आई जस्ट यूज टू लुक एट पीपल, यूज माई फिंगर्स फॉर काउंटिंग नंबर्स को भी ऐसे बोलना। फिर मैं इंग्लिश में बोलती थी, दूसरा इसको हिंदी में कन्वर्ट करते थे। वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ था टपोवेयर में, एंड नो डाउट वी ग्रू इट सो वेल। एंड ज्योति नरगस ने बोला कि आई कॉल हर माँ फॉर my Tupperware opportunity. She is my second mother. She said, Madhavi, you have a bright future in this. Why are you saying no? She convinced my husband. And then comes Asha Gupta, who was the general manager for Tupperware India. तो शी हैड जस्ट अ फ्यू मिनट्स डिस्कशन था मेरा हस्बैंड के साथ, शी जस्ट वांटेड टू मीट हिम। फिर उन्होंने पूछा मुझे 2-3 क्वेश्चंस। उस समय टपरवेयर वाज गोइंग ऑन अ डिफरेंट मॉडल। तो फिर मुझे लगा ये थोड़ा सा एक गैप लिया जब मेरे डैड की डेथ पे, तो मैंने उसको वापस सीखा। फिर मुझे लगा कि ये वाला जो अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे आगे बढ़नी है लाइफ में, तो मुझे कुछ यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेना है। देन आई केम टू नो अबाउट टपरवेयर यूनिवर्सिटी। सो आई थैंक मिस आशा गुप्ता फॉर दिस। एंड जब है ना, हर चीज़ ऐसा लगता है ये टपरवेयर है यार, बेचना है। इट इज़ नॉट बेचना, you are empowering women with this golden opportunity of Tupperware. This is what I have learned, and this is what I have thought, and that is how my journey has started. And I loved एम्पावरिंग वेमेन, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ को बैलेंस कर पाई, मेरा घर का भी और मेरा career का भी। तो I have chosen this part because there are very many women in this world, many women in India also, who want to do something during the पीरियड जहाँ पे उनकी खाली टाइम होता है, बिटवीन 11 to 1 o'clock। सो दैट वॉज द टाइम वे वी टैप्ड, वी एजुकेटेड वेमेन। हम लोग पार्टी मेथड में लोगों को घर पे जाते थे, दे यूज टू इनवाइट अस फॉर अ पार्टी, वी आई यूज टू डू रेसिपीज, आई स्टार्टेड रेसिपीज वे बैक इन 2001। Tupperware started in India in 1996, एंड 1996 8 में ही मैंने पूरा अपने टपराइज किचन किया था। Okay, and that's how that lady has given me the opportunity, why don't you become a distributor? Because I had been using these products since my childhood। कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हमारे घर पे होते थे, क्योंकि आई एम ब्लेस्ड, एज आई सेड, कि मेरे दादाजी भी यूएस में रहते थे,
चाचा जी, कंप्लीट फैमिली वे बैक इन 1950s ओनली। तो उससे क्या हुआ था कि कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास होता था, तो आई वाज वेरी मच पैशनेट अबाउट टपरवेयर। फिर मैं फादर बीइंग इन पोर्ट, पूरा डॉक का उनका हेड होने के कारण कंप्लीट हार्बर का, फिशिंग हार्बर हो, आउटर हार्बर हो, इनर हार्बर हो, आई वाज ब्लेस्ड कि मैं विक्रांत में भी, शिप में भी ऐसे ही घूमती थी, इंटरनेशनल शिप्स में भी चले जाती थी, क्योंकि पापा हर एक चीज के ना वो दिखाते थे, बेटा देखो दिस इज लाइफ। तो मैंने हर स्टेप में मैंने कुछ ना कुछ सीखा था। आई यूज टू प्ले इन द डॉक, आई यूज टू प्ले इन द शिप, एंड आई यूज टू गो इन टू द पेंट्रीज, आई यूज टू सी हाउ लवली प्रोडक्ट्स दे यूज टू हैव। फिर मुझे लगा यार, तब मैं टपरवेयर के किचन के लिए मैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए आई थी, जब दिल्ली में पार्टी में था। मैंने पूरा अपने साउथ इंडियन ट्रेडिशनल कंटेनर्स को हटा दिया। मेरे मॉम को थोड़ा सा लगा, बट मेरे डैड ने बोला व्हेन शी इज हैप्पी विद इट, लेट हर बी हैप्पी, लेट हर मेक अ किचन लाइक दैट। सो मेरे डैड ने बोला ठीक है, मेरे हस्बैंड ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, मेरे डैड ने कुछ कंट्रीब्यूट किया नया घर के लिए, तो मेरा पूरा टपराइज किचन हुई। एंड यू नो ड्यूरिंग दोज डेज स्पेंडिंग 2 लाख ऑफ ऑन अ टपराइज मॉड्यूलर किचन वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ही वाज लिविंग टू जापान फॉर अ डिफरेंट ऑपरेशन फॉर ही वाज वर्किंग फॉर मारुति एट दैट टाइम। तो फिर मुझे लगा कि व्हाई कैन नॉट आई डू समथिंग डिफरेंट। फिर मैंने किचन की प्रोडक्ट्स ली, एंड ही बीइंग एन इंजीनियर एंड आई एम अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, हमने रात को बैठ के पूरा किचन का कैबिनेट्स को डिजाइन किया था, वही प्रोडक्ट्स के डायमेंशंस को और स्पेसिफिकेशंस को माइंड में रख के। तो हमने जितनी हमने स्पेसिफिकेशंस बनाया था ना वहाँ पे, वो किचन को देके सबको लगा। फिर हमने आइडियाज दिया कि आप 2 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्वेस्ट करो 25,000, आपका पूरा टपराइज किचन हो जाएगा। वे बैक आई एम टॉकिंग अबाउट 1998, एंड आई सेड इन्वेस्ट ओनली 50,000 ऑन योर किचन। तो टोटल 75,000 में एक मॉड्यूलर किचन बनता था लोगों को, एंड सबको अच्छा लगा। एंड बहुत लोगों ने, द्वारका में जिस सेक्टर में मैं रहती थी, बहुत लोगों ने ऐसे किचन्स बनाया था। सो दैट्स हाउ माय नेम वेंट होम टू होम कि टपराइज किचन करनी है तो माधवी एडला से बात करेंगे। सो आई डिड नॉट सेल अ प्रोडक्ट, I changed people's lives. I encouraged them with this opportunity. I made them financially independent. And that's how I have become a distributor. क्योंकि कहता है ना, जब तक आप नीचे तक उसको अंदर तक जाके नहीं पता चलेगा ना, आप कोई चीज को आप अचीव नहीं कर सकते और ना कॉन्फिडेंटली बता सकते हो लोगों को। सो दैट इज हाउ आई मेड रेसिपीज विद द प्रोडक्ट्स। आई टोल्ड देम कि सी यू कैन स्टोर इन दिस ब्यूटिफुल कैनिस्टर्स कॉफी पाउडर्स, and they were called within reach. They used to look at me, ये within reach नाम क्यों बोल रहे हो? I said because it is reachable within your, it's within your shelf and you're reachable to it. So every product when it was given a name, it was given looking at कि वो within reach है, आपकी reachable point पे है। If I am talking about a retro bottle, it is looking like a beautiful, uh, glossy finish है, this bottle. And what happens when you're using this bottle and you're carrying your bottle, and this is a steel bottle and it is called a retro bottle, you are talking about a Tupperware product, you are giving a sustainable solution to people कि that आप क्यों दूसरा वो प्लास्टिक बॉटल में पानी पी रहे हो, विच इज वेरी हार्मफुल टू हेल्थ, जो माइक्रो प्लास्टिक्स आपकी पानी में जाएगा। वाई कैन नॉट यू यूज टपरवेयर, why cannot you use Tupperware steel bottles? So this is how we are educating people कि use the best solutions। क्योंकि कहते हैं ना, आपकी पैसे, if you want to save money, first if you want to make some wealth also, you have to have the best containers, and that is the solution provider we are। As solution providers we tell them health is wealth, spread happiness everywhere। जहाँ पे आपकी health है वहाँ पे आपकी wealth है, वहीं पे ही prosperity है। So I always say spread smile, spread joy, spread happiness। Wonderful. And I like the way you said that you were not selling a product. Most people or most organizations, I think that's the biggest mistake that they end up making, that you try and offer a product. It may not resonate with the person who's actually looking for it, because one is not always looking for a product, you're looking for a solution. So to create that solution and to position an underlying product as a solution to the end user, which are women, because they are the ones who actually manage the kitchen, and the way you call yourself as the kitchen queen. Similarly, every lady of the house feels that she's the queen of her kitchen. So I think that
education, that concept to make someone understand that this is not just buying a container or a product to keep it in your kitchen and to flaunt, but it is also a way to make yourself financially independent, to make yourself provide a solution to the other person, to be sustainable, to be environmental friendly. So I think on the whole, जो लर्निंग आपने बताई है, अगर जो हमारी महिलाएं हैं वो सुन रही हैं, और महिलाएं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि टपरवेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ ही काम करते हैं, उन्हीं को ही सशक्त बनाने में करते हैं, और जो माधवी जी भी कर रही हैं विद नो बायस टूवर्ड्स मेन कि भाई हम उनको नहीं करना चाहते, बट दैट इज द मॉडल that is being followed by Tupperware and by Madhvi ji also. But I think this is a great way. And that's why I said in the beginning that she's educating, empowering, and enlightening them. And I can see that you are so passionate about Tupperware that, as they say, you eat, sleep, drink Tupperware. And you are Tupperware personified. And no wonder you are doing so well and also have been accoladed for your efforts by multiple organizations. So, when you started your journey, right, as you said that Miss Jyoti helped you and then Miss Asha further helped you to understand. So, how was your experience when you empowered the very first women? जब आपने उनको और बताया तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? वो बहुत अच्छा था. I'll tell you what happened when I started my journey. The first party what we have done was in Malibu town. That is in Gurgaon. Okay, and I was a recruitee of Dwarka. You can do party anywhere. That was the condition at that time. And I called my friend. I said I have taken up this opportunity, and she said, Madhvi Garu, like I said, no, Ma. I think this is a solution provider for you to make your home, quite ease of doing kitchen work in your at your home. Then she said, "Ki haan, theek hai, Madhvi karu. What all should I do?" I said, "Why don't you invite a couple of friends?" She said, "Madhvi karu, I just have 5 friends. That's it. Because मैं भी नया नया हूँ." Even I was, जब आप साउथ से आते हो नॉर्थ में, ठीक है, और बच्चे बहुत छोटे छोटे थे जब मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, बिकॉज यू कैन नॉट टॉक टू पीपल इन हिंदी. आई यूज टू स्पीक मोर इन इंग्लिश. फिर उनका जब तक वो वर्ड समझ में आता था मुझे टाइम लगता था. आई यूज टू रिकलेक्ट एवरीथिंग इन माई माइंड. एंड व्हेन माई हस्बैंड यूज टू कम बैक आई यूज टू आस्क हिम, बिकॉज मेरा फुल टाइम की जो सपोर्ट थी वो भी साउथ से आई हुई थी, पार्ट टाइम यहाँ से था. बट समहाउ वी मैनेज्ड, क्योंकि है ना, कुछ आप साइन लैंग्वेज से भी कर सकते हो, ये मॉपिंग करो, ये करो, वो करो, दिखा दिखा के. तो फिर then I called my friend because she was a South Indian, but she knew a little bit of Hindi. तो I called her, she said ठीक है आ जाओ. फिर I took my kitchen products जो जिसमें हमने दालें सब कुछ डाली थी. ठीक है, अब तो हमारे पास बहुत अच्छे पिक्टोरियल पिक्चर्स है, सब कुछ है जिसमें हम कंटेनर्स में वो डमीज डाल के दिखाते हैं. बट उन दिनों में क्या था कि आपको हर चीज रियल दिखाना पड़ता था, अपने घर से लेके जाओ. तो फिर सारी चीज़ें मैं लेके गई, कुछ सेट्स मैंने बनाया था, फिर वहाँ पे डिस्प्ले की. एंड वाइल आई वाज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, आई वाज जस्ट यूजिंग माय पाम एंड आई वाज टेलिंग, देखो ये प्रोडक्ट जो है आपकी ये पाम साइज की है, और यहाँ पे मैं खड़े होकर आराम से 1 kg भी दिखा रही हूँ, एक दूसरी हाथ से 2 kg कंटेनर भी दिखा रही हूँ. एंड वी यूज टू कॉल इट एज लीटर्स क्योंकि इट्स एन अमेरिकन स्टैंड. तो 1.2 ये है करके इस तरीके से हम दिखाते थे. तो फिर लोगों ने बोला यार डेमो तो बहुत अच्छी है, ठीक है, एंड इट इज़ वेरी टेम्पटिंग, बट लोगों को लगा इट्स वेरी प्राइसी. तो ज्योति जी मेरे साथ थी, तो कह रही स्वीटा तुमने तो पूरा तुम्ही ने तो डेमो कर दिया, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, बट तुम्ही ने तो पूरा टेक ओवर कर लिया. मैंने बोला नहीं ज्योति जी, आई नो बिकॉज आई एम यूजिंग द प्रोडक्ट. सो आई सेड आई एम कॉन्फिडेंट आई कैन टॉक टू पीपल. एंड गुड कि वहाँ पे सब वेर मोर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग पीपल एंड लेस ऑफ हिंदी का लोग थे. तो फिर मुझे थोड़ा टाइम तो लगी. इट वॉज रियली अ टास्क फॉर मी टू कन्विंस पीपल, क्योंकि वे बैक इफ यू लुक 2001 में when you're talking about a Tupperware product, it was quite expensive. एक छोटा सा tropical cup भी was quite expensive to people because we had limited income
ऑल ऑफ अस. इट इज नॉट कि दैट कि मल्टीपल इनकम चैनल्स है कि बच्चे भी कमा रहे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे के साथ एंड यू रनिंग अ फैमिली वाज नॉट इजी. आप एक घर भी बना रहे हो, उसकी ईएमआईज भी पे करनी है, गाड़ी भी लिया तो उसकी ईएमआईज भी पे करनी है, एवरीथिंग यू हैड. इवन दो यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, यू वर थॉट कि अपने मनी को मैनेज करना सीखो. दिस वॉज वॉट आवर पेरेंट्स थॉट अस. तो फिर मैंने देखा था कि वहाँ पे जब पार्टी की, आई वॉज जस्ट फिंगर क्रॉस्ड. फिर एक लेडी आई. देखो, एवरीवेयर व्हेन यू आर सेलिंग यू नो टॉकिंग अबाउट अ प्रोडक्ट एंड टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स, शेयरिंग देम द बेनिफिट्स ऑल्सो, पीपल कम एंड आस्क यू अबाउट व्हाट इज द डिस्काउंट. ओके, वो डिस्काउंट वर्ड को थोड़ा सा मुझे लगा था कि डिस्काउंट क्यों पूछा. फिर I said, ma'am, please take your time. There is no hurry. You take your time. I'm here till the evening. Okay. Then she said, ठीक है. Because मेरा husband ने मुझे drop करके वो चला गया अपने कंपनी में. तो she said कि नहीं, आपको देना है तो इतना डिस्काउंट में प्रोवाइड करो. I said, sorry. I have come all the way from Dwarka to South Delhi, to Malibu town, and I have come to actually educate you people to use the right products. I cannot offer you discount, but I can offer you a gift. Then she said, what gift? I said, if you buy shop this much, then you're going to get this as a gift. Then she said, okay, let me discuss it with my husband, क्योंकि मेरा husband भी वही कंपनी में जॉब करते हैं जहाँ पे आपका husband भी करते हैं. तो फिर वो शाम को आएगा, फिर मैं डिस्कस करके बताती. I still remember my first party value. I got 3500 का party value. ओके, वी कॉल इट एज अ पार्टी वैल्यू बिकॉज वो 3500 में एक गिफ्ट होता. तो शी सेड कि ठीक है. शी केम बैक इन द इवनिंग. शी सेड, मैम, मेरे हस्बैंड ने ओके बोल दिया. नाउ आई एम गोइंग टू गेट दिस गिफ्ट. नो, वुड आई गेट समथिंग एल्स? आई सेड नो, बट यू वुड बी गेटिंग अ गिफ्ट फ्रॉम मी. एंड वहाँ पे उसको इतना वो खुश हो गई. फिर हमने क्या किया, उसकी फर्स्ट लाइफ चेंज करना था मुझे. There I was not looking at my commission, what I'm going to earn from the 3500. I was just keenly interested to change a life of a woman. So I said, since you have shopped for 3500, if you shop for another 1500 more, and I can guide you what all you need after shopping for these products. She said, okay, ma'am, ab bata do mujhe. Then I helped her with another 1500 order. And I said, see, you are getting this bag full of worth 1500 products absolutely free. And that was 2500 का products था. उस समय हम लोगों को किट पे मिलता था. She said, I told her कि ये डिस्काउंट भी आप ही को मिल रहे हैं, इसमें आपको किट मिल रहे हैं और इतना वैल्यू का आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. She was so happy. She said, मैम आप ऐड कर लो. एंड फिर दैट वाज द फर्स्ट लाइफ मैंने चेंज किया था. उसका नाम उमा था. और फिर उसको इतना अच्छा लगा कि शी वेंट ऑन एंड शी सेड, माधवी जी, कब नेक्स्ट पार्टी करोगे, आप कब इनकी घर पे करोगे. द नेक्स्ट पार्टी वाज लाइक डूइंग इन अ community, not a community center, it was a society, and that was in sector 45 Gurgaon. और वहाँ पे दिवाली मेला चल रहा था. तो दूसरा फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला, माधवी अगर आप यहाँ पे आके करोगे बट ओपन एरिया होगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा. फॉर मी इट वाज अ चैलेंज कि हाउ कैन आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ क्राउड. Okay, and people would be speaking more in Hindi. Again, that was the biggest task for me. So I took my friend, another friend as an help who knew much about Hindi. फिर उसके साथ मैं बोलती थी कि ठीक है, और फिर उनके साथ हमने वहाँ पे किया. My second party value was, during that particular thing, was 4500 and two more joiners. So उससे क्या हुआ, 3 रिक्रूट्स तो हो गई उसी वीक के अंदर. ठीक है, फिर मेरे लिए मोटिवेशन मिला वहां से. देन आई थॉट, इफ आई कैन गो समवेयर एंड आई कैन डू इट इन माय सोसाइटी आल्सो वेयर आई स्टे. देन पीपल यूज्ड टू आस्क मी, तू हर बार जा रही हो, क्या हो रहा है, कहाँ पे जा रही हो. आई सेड, दीदी ये पार्टी करने के लिए जा रही हूँ, आई एम गोइंग फॉर दिस, आई एम गोइंग फॉर दैट. देन दे सेड, व्हाई डोंट यू डू अ पार्टी एट होम. Then I called Jyoti ji. I said, Jyoti ji, now I'm pretty confident and I want you to watch my party again, how I do it. But please don't tell me anything. Whatever I'm doing mistakes, please do correct me in the end once the party is over. That party was in my home and I had 25 people there.
I invited 25 people from my society. We threw the kitty opportunity first, and we had 25 joinees from that party way Wow. back in 2001. And you know what was the highlight of the party? I was doing a party with a demo. You know, ये पानी ऐसे गिर जाएगा, tilt करे, tumbler रखो, पानी नहीं निकलेगा. And I bought one sheer magic container and I just placed it down, not on the dining table also, I put it down. इतना में मेरे बेटी आई, मैंने सील खोला, इतना में किसी ने बोला, मैंने सोचा हाँ जस्ट अ सेकेंड, मेरे बेटी फटाफट भाग के आई और उस कंटेनर में बैठ गए. टक, वो शेयर मैजिक बंद हुआ कंटेनर. इट वाज अ 5 kg राइस कीपर, वी यूज टू कॉल इट अ राइस कीपर एट दैट टाइम. तो फिर जैसे बैठे टक, सबने क्लैप किया. सो दैट वाज एन यू नो अटेंशन गेटिंग ओपनिंग ऑफ दैट पार्टी. So I thought कि देखो बच्चे भी बैठे. I said, see my daughter how she has closed the container so confidently. So she never fell down also. And that was a catchy moment of the day. And everybody said कि beta I want 5 containers of this. I want this. I want that. And that day we had 25 recruits, and the sale was 60,000 K by evening 5 p.m. You Wonderful. know So that's that such a we progression. that was the progression we had in 1 month. And my angel Jyoti Nargas, she said, my baby, you rock. I said, huh, really? She said, yeah, I have nothing to say. Your demos will do wonders for you, but don't stop. And we started assembly in Dwarka itself, and my place was the assembly point. Jyoti ji used to come twice in a week, once in a दो बार, ट्वाइस इन अ वीक, और वंस इन अ वीक आफ्टर दैट. और फिर उससे क्या है ना, हमने द्वारका को डेवलप किया. द्वारका में इतनी रिक्रूटिंग हो गई, इतनी रिक्रूटिंग हो गई, 1 मंथ में मैं मैनेजर बन गए. दैट वाज माय चैलेंज कि ज्योति जी, जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे ना, मेरे को एक टारगेट है कि मैं 1 मंथ में आपके साथ मैनेजर खड़े होना चाहती हूँ. और 1 मंथ में मैं मैनेजर बन गए, एंड दैट वाज कॉल्ड एज टाइकून पार्टी सेल्स. एंड आई वाज द फर्स्ट बेबी फॉर हर एज अ मैनेजर. फिर उसके बाद हम मैनेजर्स ही मैनेजर, स्टार कंसल्टेंट्स, इस तरीके से हम प्रमोट करते गए. वे बैक इफ आई लुक एट, द अपॉर्चुनिटी वाज वेरी वेरी गुड. इवन टुडे इट इज़ वेरी वेरी गुड. आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में देखो, कि कोई भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर लेडी से बात करो, तो टपोवेयर एक ऐसे अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है जिसमें आज की डेट पे भी विमेन के लिए है. अब बाकी डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में देखोगे, इट इज लाइक मैन एम्पावरिंग एंड विमेन एम्पावरिंग. Okay, both can do the business, but in Tupperware this platform is totally for the women, by the women, of the women, completely. So in true And sense, today, empowering yeah, them. in two sets of for empowering women. Not only that, कि आज की डेट पे I can proudly tell you, I am not only handling DS model, okay, I am also handling retail channel model also. I have opened 2 outlets, one in Gurgaon with my one of my friend. जब उनको लगा कि कोविड के टाइम के उसका हस्बैंड ने बोला कि माधवी, टेल मी इफ एनी अपॉर्चुनिटी इज देयर. So I told him, why look for another one? Why not Tupperware? I can easily guide her. So even though she was working, she took up the Tupperware opportunity. Her outlet is doing very good in Sapphire 83 Gurgaon. And the second outlet which I have come up is in Sector 14, Tupperware exclusive landor model, which is the biggest one in India. And it is in Sector 14 Faridabad. Third one, आज उसका बाकी चीजें फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो रहे हैं. Probably we are coming soon, and that's a little bit of surprise. And the fourth one also would be a surprise, and the fifth one would also be a surprise, and the sixth one also would be a surprise. So मेरा एक प्लान है, कंप्लीटली मेरा एक ड्रीम है कि ये साल होते होते मेरा अंडर 6 आउटलेट्स होना चाहिए, और हर स्टेट में एक That's एक आउटलेट होना चाहिए. That is so, what, so so no that wonder. I yeah, I can empower 29 women in 29 states. That is my main plan है मेरा, तो मेरा ड्रीम है वो. Wonderful. So जब बहुत साल पहले आपके पापा ने आपसे बोला था that education is something that forms the foundation of your growth, तो वो बिल्कुल सही थे. एंड जो आपने पढ़ाई की about economics, about statistics, about then you work for the planning
uh, organization. Ministry. So all that has come so much handy, where you have a vision, you have planned how you want to go ahead, you took targets on you to up. Normally it is seen that when people feel that, okay, when they leave their job and then they start to do their own business, either they are with very very ambitious targets, or they become too callous about it, ki, theek hai, we'll do it. But what I sense from you, and if I try and read between the lines, is that you went with a very focused approach. So you put your heart and soul into it. You knew that, okay, this is my target, and you worked towards your target. And कहते हैं कि जब आप कोई चीज बहुत जुनून के साथ करते हैं, when passion is the underlying foundation, then nothing can stop you. And I think you personify that. आपने दिल लगा के बिल्कुल पैशनेट होके उस चीज को किया. And I love the approach that you're not offering a product, because everybody is offering a product. And if you look at the kitchen in most households, perhaps it's the most neglected place of a house. You would buy the best decoration pieces, you would buy the best linen, the best upholstery for your sofas and everything. But when you look at the kitchen, you would have those old bottles which you would have taken out the label, and you'll stuff it, be it a plastic bottle or a glass bottle. And since I have also used products from Tupperware, I think it definitely gives a different class to your kitchen. जैसे वो कई बार ads नहीं आते कि हाँ. Ah, okay. Kare, the kitchen looks so nice, and then you also feel good. They are easy to use, easy to maintain. But that takes me to one very important question, Madhviji, that there was a time in between where, and you could correct me if my understanding or my information is wrong on that, when this whole concept of not using plastic came in Mhm. microwave, and most Mm, of the Tupperware products were microwavable. So there was mhm. I was not married then, so I didn't have my own kitchen. But I did hear from some set of people that अब हम नहीं use कर रहे हैं क्योंकि ये plastic है. But I believe that the company had come out with some knowledge and information about it, that these are safe when it comes to using in the microwave. So was there a lull moment around that time, or was there any challenge that you faced at that time? Every moment was a challenge for us, Ekta. It was not very easy. And when you are talking about a product and when you are telling people कि ये वाला आप यूज करो, तो जब माइक्रोवेव्स आया था तो लोगों ने बोला कि आप माइक्रोवेव को टपरवेयर आप यूज कर रहे हो तो वो प्लास्टिक कंटेनर है, वो आप उसका रेडिएशन है उसके अंदर जाएगी, तो वो प्लास्टिक का वो जो है आप फूड में इनटेक करते हो. बट वहां पे क्या है कि nobody knows Tupperware has exclusive products for microwave. एवरीबडी वाज थिंकिंग कि वो कोई भी प्लास्टिक कंटेनर हमने टपरवेयर से लिया वो हम माइक्रोवेव में रख सकते हैं. So we used to do demos and parties with different क्या कहते हैं कि हम उसको थीम सेटिंग करते थे. आज आ जाओ, कुछ केक सीखो 6 मिनट में माइक्रोवेव में. तो जब आपको माइक्रोवेव जब आप ओपन कंटेनर में रख के आप हीट करते हो, उसका जो रेडिएशंस आते हैं वो डायरेक्टली फूड पे जाता है. बट इन टपरवेयर वी हैव ऑल कंटेनर्स विथ लिड्स, जो आप लिड के साथ रख के, और वो माइक्रोवेवेबल, वो सर्टेन कंडीशंस के लिए और सर्टेन पैरामीटर्स के अंदर वो प्रोडक्ट बनी है. When you use those products in microwave, it is not harmful. So we started changing our way of selling, and we started doing recipes, live recipes. हम लोग सबसे पहले किसी के घर पे कोई भी बुलाते थे पार्टी के लिए, हम पूछते थे कि आपके घर पे माइक्रोवेव है, तो कहती थी हाँ माइक्रोवेव है, बट मैम मेरा हस्बैंड मना करते थे माइक्रोवेव में वो मत करो ये मत करो. आई सेड नो प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू टीच यू अ क्विक 6 minutes केक रेसिपी. देन शी यूज्ड टू से कि कैसे मैम, हम लेकर आएंगे कंटेनर्स, आप उसमें खा के देखना. तो फिर आप ये पहले मत बताना आपने किस में पकाया इसको, जब आप घर पे बाद में सर्व करोगे उनको पूछो ये टेस्ट कैसी है. So that is how we started teaching, educating people कि that our products, our microwavable products are safe for health. क्योंकि है ना, बहुत लोगों की माइंड में है कि
टपरवेयर प्लास्टिक है. It's not only plastic. We are in glass. We are with porcelain. We are with steel containers. Everything. Now you ask Tupperware anything, we can tell you we are solution providers of plastic, which we have started with. We are solution providers of steel. We are solution providers of porcelain. We are solution providers of glass. तो इससे क्या होगा, वेर एवर वी टॉक अबाउट फाइन वर्जिन प्लास्टिक विच इज नॉट रिसाइकल्ड टू स्टोर योर फूड. when we talk about glass, we talk about fine glass which is carcinogenic free. हम लोग मार्केट में जाते हैं, हम उठा के लेकर आते हैं, हम सोचते हैं ये ग्लास बहुत अच्छा है. नो, एवरीथिंग हैज समथिंग और दी अदर. हम जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमने पोर्सलिन उठा के ले आया, तो वो पोर्सलिन कितनी फाइन है, उसके अंदर हम सारी ट्रेनिंग सिखाते हैं हमारी सेल्स फोर्स को. ये पोर्सलिन इससे बनी है, ये इस तरीके से यूज करो इसको. व्हेन वी टॉक अबाउट मेलामाइन, वी टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वालिटी मेलामाइन. Okay, when we talk about steel, we talk about the first grade steel. क्योंकि आप स्टील, आप we being South Indians, we are born with steel. ओके, क्योंकि साउथ इंडियन की घर पे आप कहीं पे भी जाओ, वो स्टील मिलेगा, पीतल मिलेगा, ब्रास मिलेगा, ये सारी चीजें मिलेंगे. तो बट हम ही लोग कुछ चेंज किया अपने आप को. आई वुड ऑलवेज से कि एक मिथ से लोगों में कि ये खराब है, ठीक है, और उन्हीं के घर पे जाके देखो, सबसे पहले they would be using the plastic which is not supposed to be used. They would be using the glass which is not supposed to be used. They would be using the porcelain which is not supposed to be used. उनको लगता है यार टपरवेयर का इतना महंगा है तो मैं वहां पे जाऊं, मुझे इतना सस्ता पे मिल गया. पोर्सलिन है, पोर्सलिन में भी कितनी क्वालिटी ग्रेड्स है, ग्लास में भी कितनी क्वालिटी ग्रेड्स है, प्लास्टिक में भी कितनी क्वालिटी ग्रेड्स है. सो टपरवेयर डजंट कॉम्प्रोमाइज अबाउट the quality. So quality stands from your home. Quality stands what kind of clothes you are wearing. Quality stands what kind of food you are serving to your family. Quality stands from where are you storing your food. Quality stands कि what kind of lunch containers are you providing to your family. जब हम लंच लेके जाते, लोग बोलते थे मैम, लोगों ने बोल दिया प्लास्टिक यूज नहीं करना है. तो मैंने बोला क्यों भाई, बोलो मैम ग्लास लेके जाना है. तो मैंने बोला ठीक है, वेरी गुड, यू टेक ग्लास, कैन आई सी योर ग्लास कंटेनर. देन दे यूज टू ब्रिंग दोस ग्लास कंटेनर्स, और फिर उसके ऊपर लिड देखती थी मैंने बोला ये सेफ है. जब आप खाना ही लेके जा रहे हो, जरूरी नहीं है आपकी आप ऐसे ही लेके जाओगे, वो तो टिल्ट होते रहती है ना, ऊपर का ग्लास से आपका प्लास्टिक सेफ है. देन दे यूज्ड टू से यस मैम. तो फिर सस्ता लो, महंगा लो एक बार, बार बार सस्ता वाला चीज़ें लेने से अच्छा. और सबसे अच्छी एडवांटेज टपरवेयर में क्या है, इट हैज़ अ लाइफ टाइम वारंटी पॉलिसी अंडर सर्टेन कंडीशन, ब्रेकिंग, चिपिंग एंड क्रैकिंग. देर इज अ TNC विच इज अप्लाइड, टर्म्स एंड कंडीशंस. आप उसके अंदर आपने यूज किया, आपको प्रोडक्ट भी फ्री पे मिलती है. Correct. And when we do demos, we tell people, why are you paying? For what are you paying? You are paying for your health. You're not paying कि देखो दिखाने के लिए, कभी भी पे मत करो. पे करो उस चीज के लिए कि जहां पे आप एक फैमिली के लिए एक सुरक्षित फैमिली, एक हेल्दी फैमिली बना सकते हो. If I have joined Tupperware, why did I take Tupperware opportunity? It is only to safeguard my family with the right serving, storing, everything in the right products. पैसा तो आता है, पैसा तो जाता है, I believe in that. बट आपकी हेल्थ आपके हाथ पे है. आपने एक लाइफस्टाइल सोल्यूशन देनी है, एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, तो आपके पहले घर शुरू होती है आपकी किचन से. If you store their ingredients in the right containers, your family is also healthy, wealthy, and wise. Absolutely, and I think every woman would want that that she herself, her family, her household is healthy, wealthy, and happy. And I think that is what Madhavi Yedla is trying to do by empowering each one of you. तो जितनी भी महिलाएं हमारी आज सुन रही हैं या बाद में सुनेंगी, तो समझिए कि कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो वो हम क्यों कर रहे हैं. सिर्फ करने के लिए मत करिए, और डोंट मेक इट अ fat statement just because someone is doing it, so I also need to use a
porcelain or a ceramic bowl or a glass bowl, but please understand the actual यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड जैसे कि एग्जाम्पल दिया कि नीचे ग्लास है लेकिन ऊपर तो प्लास्टिक का ढक्कन है और खाना Hmm. आपका मूव कर रहा है, इफ दैट प्लास्टिक इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी, you in any Yeah. case have exposed your food to that and your health also. So I think Hmm. it boils down to the fact ki how educated you are or how much you are willing to understand about the product or the service that you are wanting to avail. Yes, of course, everything comes at a cost. Some products are priced at a higher price as compared to other, and India being a very price sensitive market. लेकिन जैसे हम इन्वेस्टमेंट्स में भी कहते हैं कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आप ये भी तो देखिए कि सामने आपको रिटर्न क्या मिल रहा है. सिर्फ रिटर्न मत चेज कीजिए और रिस्क से दूर भी मत भागिए. इफ यू लुक एट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, you know, and you understand it, there is, you know, a way that you can achieve all that you wish to. So माधवी जी, एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे before I say a few lines for you, that you've empowered so many, and of course, as they say that charity begins at home, you first empowered yourself and then you moved here. Would Madhvi have been the same Madhvi that she is today had she continued to do that job that she was and not taken up the distributorship of Tupperware? माधवी वुड नॉट हैव बीन द सेम, बिकॉज मैंने टपरवेयर में आने के बाद बहुत चीज़ें सीखा कि आप एक जॉब भी कर रहे हो ना, वही चीज़ आप करे जा रही हो रिपीटेडली, एक आध ऐड होगा विद द चेंजेस, बट इन टपरवेयर एक ओवरऑल डेवलपमेंट मिला मुझे कि मैंने बहुत लोगों से बहुत चीज़ें सीखा. और सबसे अच्छा, व्हेन यू टच पीपल्स लाइफ, एवरी लाइफ यू टच you learn something from them. So Madhvi would not have been Madhvi if she was in that job, but Madhvi is totally different, a different Madhvi now, because I learn every day from every woman, from every girl, from every man, whomever I meet, and everybody has taught me something in my life. When I go somewhere and when I'm going out with my family or with my friends and all, and when people look at me and say, "Ma'am, how are you?" you know it gives you a lot of happiness. And somebody calling you ma'am at this age also, ठीक है, and somebody looking at you around night 10 p.m. We were out for a dinner, and a few people recognized me there in a different area, and they said, "Ma'am, how are you?" So that was a pride moment. What I have earned was that people love the way you are, people have learned something from you, that is why people are recognizing you. So Madhvi has given, टपरवेयर ने बहुत दिया मुझे. और जहाँ पे मैं साउथ साउथ से मैं नॉर्थ में आई, मुझे एक दोस्त भी नहीं था, मैंने इतना दोस्त बनाया, इतनी लोगों से बहुत चीज़ें सीखी. जब लोग आके मेरे को बोलते थे, मैम मेरे घर पे ये प्रॉब्लम है, मेरे घर पे वो प्रॉब्लम है, मेरा हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, और फिर मैं बोलती थी, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? फिर आपके हस्बैंड ने अलाउ नहीं किया तो आप कहाँ? मैम मैं चुप चुप के आई. मैंने बोला, नहीं, नेक्स्ट टाइम आप अपने हस्बैंड के साथ आओ, लेट हिम अंडरस्टैंड दैट यू आर इन द राइट प्लेस. सो शी वॉज प्रिटी कॉन्फिडेंट. नेक्स्ट टाइम उसका हस्बैंड को लेकर आई. दिस इज हाउ वी शेप्ड वुमेन्स लाइफ. नो, इवन एवरी मोमेंट आई लर्न, एंड एवरी डे आई लर्न. और फिर मुझे है ना, मेरे घर को भी हैंडल करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि है ना, Absolutely. जब आप बाहर वालों को हैंडल कर सकते हैं ना, घर के हैंडल करना मुश्किल नहीं होती. एंड एवरी डे हैंडलिंग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन एंड ऑल, देन आई फील इट्स वेरी इजी. कई बार चुप रहना पड़ता है, कई बार देखना पड़ता है, कई बार सोचना पड़ता है, कई बार वापस घर जाके सोचना पड़ता है, मैंने आज सही किया गलत किया. तो एवरी डे वो क्या है, आप सोच रहे हो, मीन्स आप कुछ और नया करने के लिए सोच रहे हो, कुछ और नया सीखने के लिए जा रहे हो. सो माधवी वुड हैव, जॉब पे है तो Definitely. डेफिनेटली आज की माधवी और उस टाइम की माधवी में बहुत जमीन आसमान के अंतर है. और मैं अपने शुक्रिया अदा करूंगी मेरे फैमिली के साथ, और जितना भी मेरे साथ जुड़े हैं, समाचार 24, हनी, विकास, माय माय आउटलेट ओनर्स, निधि, राधिका, माय फ्रेंड्स, माय टीम, रेनू, रंजू, एवरीवन, कीर्ति, एवरीवन, आज उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे. So I owe my complete success, my Tupperware company, our MDs, our regional heads, everyone, Daman Ho, Indrani, Nitin, everyone.
फेलो डिस्ट्रीब्यूटर्स, क्योंकि हम आपस में लड़ते भी हैं, हम कुछ सीखते भी हैं। यार वो इस उम्र में कुछ कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? You बिल्कुल। feel energetic in yourself and people look upon you, माधवी जी आपको आना है, हम लोगों को मोटिवेशन चाहिए. So this is how you are back again. Urmil ji hai, she is around 65 or 66 years old. Even I learned a lot from her. कि जिस दिन मैं थोड़ा सा पीछे हट रही थी, यार क्या हो रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो शी केम एंड शी स्टूड, मैम मैं हूँ ना आपके साथ. Then I thought कि I was in my 40s at that time. I thought कि यार 65 years की लेडी, वो मेरा माँ की बराबर की है, वो आके मेरे साथ खड़े होके बोल रही है कि आप क्यों नहीं कर सकते हो, मैं कर रही हूँ ना. तो एवरी यू एनर्जी आपके लिए वहीं से मिलता है. सो एवरी टाइम कोविड की पीरियड हो, आई थैंक हनी एंड विकास, उन लोगों ने मोटिवेट किया, मैम चलो कुछ नया कुछ करते हैं. फिर रेसिपीज आइडियाज के साथ घर घर जाके हम रेसिपी शोज करते थे. सो एवरी second, I could say fraction of a second, has taught me, and I lived with Tupperware. And I tell everyone, this is one of the fantastic opportunity of women, where you can balance your life, where you can give healthy lifestyle solutions to people, where you can give healthy solutions to people, and where you can spread happiness, spread smiles, and spread joy. So whatever you can do is with Tupperware, because I always say about health, wealth and happiness. जहाँ पे आपकी health है, वहाँ पे आपकी wealth है. जहाँ पे आपकी wealth है, वहाँ पे आपकी prosperity है. एब्सोल्युटली। एंड जितने भी लोगों का नाम माधवी जी ने लिया है, मैं भी उन सबका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज हम ये माधवी से मिल रहे हैं जो फुल ऑफ पैशन है, फुल ऑफ कमिटमेंट है और कितनी सारी महिलाओं को सशक्त बना रही है। तो माधवी जी, वैसे तो मैंने कहा था कि मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, बट वो क्वेश्चन था टपोबे की डिस्ट्रीब्यूटर। अब मेरा आपसे सवाल है, एज दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ समाचार 24 प्लस, की आपकी जो जर्नी रही है समाचार 24 प्लस के साथ, वो कैसी रही है, एंड एनी मैसेज दैट यू वुड लाइक टू कन्वे फॉर समाचार 24 प्लस। मैं जब समाचार 24 प्लस के साथ एसोसिएट हुई थी, हनी एंड विकास के साथ, तो बोला कि मैम आपका परछाई हिंदी में क्या बोलते हैं, कि आपकी वो चाहिए परछाई हम, हिंदी में शैडो। शैडो, आपका शैडो चाहिए हमको. मैंने बोला सपोर्ट ऐसा है, चाहिए। मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ टपरवेयर की, मैं इन चीज़ों में नहीं आ सकती. मैम बस आपका नाम चाहिए हमको. मैंने बोला ठीक है, बट आई हैव नथिंग टू डू विद दैट. और आज की जो हनी विकास का टीम मैंने मिली थी इतनी टाइम के बाद, कोविड का लास्ट टू लास्ट इवेंट्स भी मैं आ नहीं पाई, तो अवार्ड्स वगैरह में, तो आज का टीम इज़ अ फैंटास्टिक टीम. आप हो एकता, ईला मैम हो, हनी है, विकास, कुलदीप, यू ऑल रॉक्ड. एंड आप बिल्कुल, आई विश लॉट्स ऑफ सक्सेस टू ऑल ऑफ यू, लोड्स ऑफ सक्सेस. एंड ये टीम हमेशा हमेशा साथ में रहे. और कहते हैं ना, हम साथ हैं, हम साथ हैं. हिंदी में गाना मेरा इतना अच्छा नहीं है गाना, हम तो साथ मैं, साथ हैं। हम साथ साथ है, तो मैं यही कहूँगी, गॉड ब्लेस अस ऑल एंड लेट्स शेप अप टू अनदर नेक्स्ट लेवल. एंड आई विश यू ऑल अ रॉकिंग समाचार 24 प्लस. एंड वंडरफुल। गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू। तो हनी और विकास की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू फॉर दीज बेस्ट विशेस, बट आई एम नॉट गोइंग टू लेट यू गो until I read out these lines for you. uh, since I write, so sometimes what you write is not just for that moment, but it kind of, when you meet someone, you feel that, oh, these lines actually befit this person. So I'm going to read something that I'd written. It's a little longer one, but I'm going to try and keep it short and concise. So it's in the form of a, like, the question is that who am I? So for all of you, who is Madhavi? Let me put it this way: a proud woman, a woman who's neither a goddess nor a victim, a woman who has a mind of her own, a woman who doesn't believe in comparison, a woman who knows to lift self and others, a woman who's not only financially independent but confident too, a woman who plays many roles without compromising and letting it take a toll. She's a nurturer, a caregiver, and loves herself too. I've always seen her dressed immaculately. She's the epitome of courage, stands tall on her ethics, shall grow even though
someone may want to pull her down. I'm just picking up words from there. I'm not reading the entire poetry. A woman who believes in perseverance, a woman whose favorite is she herself, who believes in the ability of a human. She is a woman who stands for each and every emotion. If you think she's weak, she's frail, or she shall ever fail, laugh it aloud and think again, as she is the one who is and knows her game and is the game herself. So thank you so much, Thank you. Madhvi ji, Thank you for for the being here. lovely words, Ekta. That So means a I lot. hope, and I think every time that I have met you, we've interacted, we've had a chance to talk informally, formally. This is what I felt about you, that you are what you are, you stand for what you say. There isn't a pretense about you, and I'm so glad to know more about you today through your journey from your childhood till now, and how you are shaping and empowering women. So thank you so much for doing that and Thank for you. being here at समाचार 24 प्लस. तो पूरी टीम की तरफ से आपको दिल से थैंक यू, एंड सभी दर्शकों को उम्मीद करती हूँ मज़ा आया होगा आज माधवी येडला जी की जर्नी सुनकर. तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज समाचार 24 प्लस या हनी और विकास से संपर्क कर सकते हैं, और अपनी जर्नी यदि बाहर लाना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं. तो आज के लिए इतना ही. फिर मुलाकात करेंगे जल्द एक और शख्सियत से, उनकी कहानी, उनकी जर्नी के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ और enjoy the festivities and take care everyone. Signing off for today. Bye bye. Take care. Thank you.